क्लैप देने से शुरू करते हैं। दिख रहा है क्या हाथ? ऊपर दूं? तो अपन एंट्री क्यों किया? ये सब बधू एकदम कैजुअल है। हमारा पॉडकास्ट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू चार विचार। आज हमारे साथ है नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर नेमिल शाह, हु हेट्स दैट टाइटल, हु डजंट ओन अप टू दैट टाइटल। उसको बोला कि तो नेशनल अवार्ड जीत के आया तो वो भाग जाता है। नहीं यार, भागता तो नहीं, लेके भाग जाता हूँ। तो मेरा और नेमिल, वी वर बैचमेट्स, but we didn't like each other for 3 years when we were batchmates. मेरे को कुछ ऐसा भाई नेमिल, ऐसा कुछ नहीं था। एंड मोमेंट में बात कर। But we barely spoke. हाँ। Then we went to Haryana to shoot a friend's film. Did we shoot that film? नहीं, उसने कर ली ना फिर अभी। उसने हमारे बिना बाद में कर ली। And while traveling, I think we spoke about this, कि why we didn't speak for 3 years. And it was a nice conversation. And after that, he's been like a brother who has helped me out a lot when I was going through tough times. तो और बाकी क्या, तू बोल अभी कुछ। बस यार, मतलब हाँ, आई थिंक फर्स्ट तेरे से ही मिला था ना कॉलेज में। हाँ, because we knew उर्वशी मैम। हाँ, Nemil was, I met Nemil before we started college. हाँ, बट हाँ वही, उसके बाद ऑफ कोर्स इट्स अ जर्नी टू टेक, एंड अभी तो काफ़ी अच्छा है। ऑल्सो बिकॉज आई थिंक एक ही चीज़ करनी है ना, फिल्म बनानी है, अच्छी बनानी है, कुछ करना है, तो दैट गिव्स अ मतलब सेम डायरेक्शन। करेक्ट। बट देखो क्या लगता है, अगर अपन में से किसी को भी नहीं बनानी होती फिल्म, तो वुड बी स्टिल बी फ्रेंड्स? I think so, because I don't know, film was one way. मतलब अंकुर वाली जो फिल्म थी, वो फिल्म became a reason of us coming together and discovering a new friendship. But apart from that, the conversation about the film you are trying to make, or the film I'm trying to make, came in very later in our dynamic. The conversation started off with us being just two people, two friends, and then films came in later on. And I think in those 15 days in Haryana, I actually discovered the person you were. Because मेरा पहले से ये था कि I'm not sure, I wasn't able to understand you. But then that happened. And हाँ, so I think अगर हमें दोनों को फिल्म्स नहीं भी बनानी होती या किसी एक को भी नहीं बनानी होती, friendship would have still happened. देखो क्या लगता है? मतलब मेरा थोड़ा शायद अलग पर्सपेक्टिव होगा। हाँ, कि फ्रेंड्स तो हो जाते हैं, बट टू मेंटेन इट आल्सो आई थिंक सेम डायरेक्शन, सेम गोल, हाँ, वो काफी मेरे लिए तो आई थिंक वो वर्क करता ही है, बिकॉज अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव कॉन्वर्सेशंस विद पीपल हु डोंट, ऑफ कोर्स फिल्म्स तो है ही, बट इवन there should be some inclination towards art is what I feel. Not necessarily make films, but to able to understand the world or think about life, world, and how we live. I think if that question goes away, I don't think I can be friends with anyone, or I can sustain a relationship with anyone. Yeah, for me at least. That constant inclination towards seeing life through art and seeing art through life. Yeah. True. But before we get into the artistic side of things, one thing, again, we traveled together and that's how we became friends. You're like, if I list down the people who have traveled the most, the people I know, I think you are in top 2-3. You have traveled a lot. You keep traveling. And you're also the guy who keeps reading what is that book? Atlas. हाँ, Atlas तो है ही। हाँ, Atlas पढ़ते रहता है, और वो गेम क्या होती है? मेमोरी गेम, where you keep adding names. है ना, वो भी Atlas। तो ये क्या है, ये fascination with और inclination towards traveling? वो आई थिंक पहले से ही आ गया, टू एक्सप्लोर, एंड वही सब अगेन सारा कुछ फिलोसॉफी से ही रूट हो जाता है शायद मेरे लिए। तो ये द मोर यू सी द वर्ल्ड, द मोर यू एक्सप्लोर, द मोर यू लिव, आई थिंक उसी से सारी चीजें होता है। ऑफ कोर्स आई हैव बीन वेरी प्रिविलेज्ड इन अ सेंस कि स्टार्टिंग से
एक मौका मिलता आया है थ्रू माई लेटर स्कूल डेज या 9-10 से शुरू हो गया था, और वो एक प्रिविलेज था कि मैं कर पाया वो भी. So I could go out on solo trips during my later part of my school. So वहाँ से सारा शुरू हो गया था, and वो मज़ा है कि and वो हमेशा अगर मैं कहीं जाता भी हूँ तो एक वो फोमो भी है, शायद बोल सकते हो उसको, या वो भी है कि ओके यू नीड टू ट्रैवल मोर एंड यू नो यू आई जस्ट एंजॉय इट. समझ में आता है, यू मीट लॉट ऑफ पीपल, यू सी लॉट ऑफ पीपल डूइंग डिफरेंट थिंग्स. नॉट नेसेसरीली कि मैं जाके वहाँ दोस्त बनाता हूँ या फिर और कुछ करता हूँ, बट जस्ट टू सी डिफरेंट प्लेसेस, एक्सप्लोर एंड अगेन थिंक अबाउट लाइफ. वहाँ पे जाके सोचना और यहाँ पे जाके सोचना. आज हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग प्लेज. आई एम कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट दोस पैरट्स. अभी मेरा एक वो भी हो जाता है काफी टाइम कि मैं देखता नहीं हूँ मैं किसी को. अगर किसी के साथ भी बात करता हूँ, लॉट ऑफ टाइम इट डजंट वर्क इन योर फेवर, बट आई डोंट लुक एट दैट पर्सन. और मेरे से वो हो पाता नहीं है शायद. Eyes wander around. हाँ, eyes wander around. I keep looking for different things. Lot of things go on in my head at that point of time also. But yeah, everything, travel and everything then leads up with the philosophy of life and you know things attached to it. And that's Just how exposure to all kinds of things adds a layer of perspective. Yeah. I don't know. What do you think about travel? I mean, how do you see it? In a similar light only, that it does expand the horizons of what are the possibilities, what all is happening. It keeps you, and it regardless of the kind of films you want to make, it adds to you as a human being, and that's where your art comes from eventually. Yes, so it does get connected, but I think I have barely traveled, but whatever experiences I've had, like one trip we had to Pondicherry, it it's opens up things, and then you can pick and choose what do you want to take from that place, what you don't want to take from that place. And a lot of things do get embedded in your subconscious without you knowing, of course. So I think it does and should be essential. If you have the privilege to do so, it should become like an essential part of what you do. But coming to this place, this is where you showed me a film you made in Amazon. 923. और वो तूने बोला था कि एक स्क्रीन करता है और साउंड नहीं है फिल्म में साउंड नहीं है एज अ क्रिएटिव चॉइस. एंड सनसेट पे फिल्म देखनी तो 5:45-6 को आ जाना. इट वाज मी, यू, अंकुर एंड सुमित, एंड देन वी वॉच दैट फिल्म, right? And before that we were already discussing, we can talk about 727. We were already discussing the feature you have written, 727, correct? Now the film you made before this, Dal Bhat, was a narrative, right? And from that, if I read that script, because I've read that script as well, and when I'm reading 727 right now, there's a drastic change in your storytelling, selection of a story, if in general the way you are making films. Now it's more about an artistic expression, experimentation with the form, etc., etc. Initially, Dal Bhat is a very accessible film, right? So could be. What I was always curious about is where did that, because I know where you come from, how you've grown up, then Lunchbox happened, that change of perspective towards films, etc., etc. But this comes very naturally to you, and it also comes from what I have understood is you as a person trying to break norms, not trying consciously, but always wanting to push the boundaries. So what do you think, how did that change happen? I don't think मतलब वो ऐसा change की तरह मैं तो नहीं देखता हूँ, because of course I think this is more personal. Of course वो भी तभी personal था, तभी सारा कुछ था at that stage of life where I was. And वहाँ से it's just about how you understand life, how you grow up, and I think these are for me at least of my life, the most where you think the most, or you build your own philosophies or maybe worldviews that you know, maybe I won't say कि every time this is the base of your entire life,
but I think बहुत सारी चीजें change होती है, and of course there must be a lot of change which I don't feel like looking at also. तो इसलिए मैंने शायद ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया है कि कैसे क्या change हुआ. But of course change हुआ है, and इसमें भी it's not about, for me, to me it's not about कि breaking the norms or exploring different things. Of course exploring different things है, but more than breaking the norms or going away or doing something different, it is just personal. If it is personal, I don't then want to question more deeper into that. Of course, then you question about okay, why, and which is true with any artistic form, right? Ki if any decision, even if you are painting cake red stroke hai, to why there is a sudden red stroke in between, you at least for yourself you have an explanation for that, right? So it's maybe same. It is same. I mean, just I know it's honest, and then I do it, and then I have explanations for different things in different ways, according to what I feel and think and want to portray. And but yeah, I mean, it's more awareness about how you look at films also. पहले तो ऐसा था क्योंकि film it's something very different or different में आ गए. But now it's also about understanding art in general, life in general, and then amalgamation of things. But I think it's similar also to, maybe not that true with you, for example, who has also been making films at different ways, but there is still some essence there. Maybe more for you than me, but I also feel कि कुछ ना कुछ तो same चीजें आएगी अभी भी. कुछ कहीं से तो आती ही है वो. Correct. Which will always stay. Maybe because you have been not that distant in terms of, for example, शून्य से जब बनाई होगी, जब when you started the inception of it and Green Little Man या जो भी बोले. Of course, there is also a lot of changes in terms of approaching and a lot of things that would change. But maybe that change is more for me than you, and that's why you also feel that it's more. Maybe. Yeah, it is by default that when you take your work so personally and create something from like something that comes from within, for lack of a better phrase, it will become a reflection of what you have been, right? Yeah. And how you have changed. So definitely, what I wanted to ask you is, when you make an experimental film, I'm pretty sure this conversation you have had with multiple people, I've also had with multiple people, is that कि अरे पर ये लोगों को समझ नहीं आएगा और फिल्म बहुत एक्सपेंसिव आर्ट फॉर्म है, सो तेरे इंडल्जेंस के लिए किसी को पैसे लगाना, मतलब why would someone put in money in your artistic expression which won't be understood by many people, so they just boil it down to, I know there are multiple ways of getting the money back, but why would someone take that risk, etc., etc.? What's your opinion on this balance of art and commerce and how one can approach this? Firstly, I don't think I look at films as experimental films or narrative or any other film. I just look at it as film, and more importantly as art in any sort of way, right? And the other thing is, because I mean, I don't see कि मैं किसी को बना लूँ और वो पैसा डाल दे. I also want that sustainable, because that you can do only for one. You can only make one film, maybe. Correct. With that, because after that, people would know, right? About it. For example, same thing as, it's not about making fool of people or anything, but for example, you can only crowdfund once in your life, right? तुमने एक बार crowdfund कर ली फिल्म को, second time वापस you can't go to that same friend, because most of the times it's through the inner circle of people that know you. So you can always go there and do those things. So therefore, I feel it's about understanding you and then trying to make whatever. If you want to do something, anyways, making a film is in itself is difficult. So this is also another challenge that you need to take about. Okay, I also want to know more कि कैसे मैं कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे. If ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचती है, then automatically things will work out. And then of course I try to do it with as less resources as available. So I mean, it's about you. You need to find your way to make things. I mean, you need to
if you have a question कि कौन पैसा डाले, so I would say कि अगर क्या मैं पैसा डालूंगा, मेरे पास अगर पैसा हो, फॉर एग्जाम्पल एट दिस पॉइंट मे बी नॉट, बट क्या अगर पैसा हो तो क्या मैं डालूंगा? इफ द आंसर इज यस, देन आई वुड वांट टू मेक द फिल्म. एंड आंसर भी यस कब होगा? जब आई रियली वांट टू मेक दिस फिल्म. So it's about, for me, it's just about okay, if you really want to make this film, then I don't think there is any obstacle that would worry you. Overcome. Yeah, and I mean you need to find ways, of course. ऐसे ही बनानी मुश्किल है ना यार फिल्म तो. हाँ, 100%. But it just adds another layer of resistance. Of course that is, because where you could have just taken an easier way writing a mainstream sort of a film, but वो आता ही नहीं है. मतलब आता नहीं, मतलब अंदर से नहीं आता है. Yeah, but वही है कि यार वो हम, मेरे को लगता है कि क्यों ऐसा सोचते, because we are now sitting in Mumbai, we are covered with so much of commerce and talks about that, and we know films that do so well and that are so heavily expensive, and then they do so much in the box office also. But मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सेम हो सकता है दुनिया भर में. अगर होता भी है, then for me it's about कि मैं वो वे ढूंढ के निकालूंगा जिससे मैं सस्टेनेबली बना सकूं, क्योंकि मेरे को भी ऐसा नहीं है कि मेरे को एक फिल्म बनानी है ना. करेक्ट. मुझे भी है कि मैं फिल्म तो ठीक है, चल शायद एक बनाऊं, दो बनाऊं, मेरे को नहीं पता कितनी बनानी है, बट मेरे को ये तो पता है कि आर्ट से तो कभी दूर नहीं जाना है मुझे. और कोई भी आर्ट फॉर्म में जब भी कुछ भी वे में एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा, so I think there are going to be obstacles. Correct. I mean this is just a way of looking at things. You are right, of course, कि वो कोई क्यों पैसा डाले if you are thinking in that sense. हाँ, I'm just asking कि this conversation always boils down to that कि अरे हाँ, but तुम्हें समझना पड़ेगा कि लोगों के लिए बना रहे हो तुम. But I totally agree to what you are saying, and that's why I'm also like very inclined towards working with you on 727. पढ़ लिया मैंने. Yeah. नहीं, but yeah, I mean it's very, it's I think it's how you look at things. And if that is something that you want to do, then you will eventually do it. Find a way to do it. Fair. मेरे को लगता है बहुत सिनेमा आर्ट की बात कर दी. अभी एक दूसरा साइड है नेमिल का जो मुझे लगता है बाहर लाना चाहिए. So you just started a production company, and it's called it starts with film, but let's see where it goes. It's called Farting Films. Farting Films नाम रखा है तूने, क्यों? I mean, क्या fascination है? See, everything, even if you try to take the conversation way away from life philosophy, it will again come to that. I just feel, I'm very fascinated with these things. I mean, yeah, I mean, people laugh. He's laughing right now. You know, anyone who's also listening to it would be laughing. And I find it okay. Of course, हंसना तो चाहिए, मजेदार है हंसना. But I think I'm very inclined towards it. I just don't. I try to understand why people behave certain way. I don't try to be very conservative in that sense about being a polite human, or you know. But yeah, I mean all these things, burping, farting, you know, these are a side of humans. I mean, I don't understand also why we try to go away from it in a way. And yeah, of course. So it's just my way of, I don't have like a lot of explanations कि मैं इस पे कुछ बहुत philosophy, but मुझे fascinating लगता है इसलिए रख दिया है. Because I can do that, right? It's my thing. So yeah, I mean it's just that. But Gutsy है ना, everything you do, I always feel that maybe from your perspective it's not. Of course. I mean that's what I mean. If you have to, I think it's not just about standing out or anything other than that, but हाँ मतलब मुझे सही लगता है तो कर दिया, and then you own up to it. That's what I think. I mean, even if you, for example, when you make films or when you create anything, you know what you're doing. There would be people 5 तेरे साथ होंगे, but 50 तो शायद गलत भी बोल रहे होंगे ना, कि उनका वे अलग होगा, because everyone wants to make films. Even while making a film, each and every individual wants to make their own film. They see it they visualize in a different way, and it is how it happens usually. But yeah, I mean for me it's just about कि सही लगता है तो then own up to it and then work towards it. Correct. What do you? I mean, would you be ashamed of this name or?
No, I think it's Why do you think it would be? Why it's gutsy? Why do you think it's gutsy? It's out of the conventional norms, right? Yeah. So anything that goes out of it, वो normally नहीं देखा ना, वो usually नहीं देखा है. So that's why, and also the thing is, because of what you said, building onto that, only that how you said कि I don't understand why people run away from fart. हाँ, everybody farts, but it's like अरे नहीं, I didn't fart, right? But just putting it out there ना, वो वैसा है कि ये करते सब है, उठा के सामने डाल दिया, and it's the film you have written ना. मेरा वही था कि the kind of film you have written. So first, let's say film में शुरू कैसा था, farting films present, and उसके बाद the film. So the radical difference between the two, from my perspective, that's why I felt it's gutsy. Yeah, I mean, any which ways I feel कि कोई भी जो companies के नाम आते हैं पहले, वो कभी भी कोई film से match नहीं होने वाला है. At least when you are making films, you don't know who are the production companies that are going to associate with you, right? So you can't go and write anyways. तो कोई भी आएगा, of course you might say कि ये बहुत ज़्यादा ही हो गया, but then ये ज़्यादा हो गया क्योंकि it also is standing out, right? 5 आएगी तो नाम शायद पहले पढ़ेगा ना कोई और हंस देगा तो याद भी रखेगा वो. हाँ मतलब वो नोट तो हो जाएगा, but वो इंटेंशन सिर्फ वो नहीं है ना. मतलब वही बोल रहा हूँ ना कि अगर आज कोई भी फिल्म का नाम आता है पहले, कोई भी प्रोडक्शन का नाम पहले आता है, कंपनी का नाम, तो तेरे को लगता है कि वो फिल्म से रेजोनेट करता ही है? नहीं करता ना, कभी भी नहीं करता. सो इट्स नॉट, हाँ चल ये ज्यादा नहीं करेगा शायद, बट तो वो भी नहीं करता, ये भी नहीं करता. सो आई माइट डिग्रीज ऑफ डिफरेंस चेंज हो जाएगा. हाँ अलग है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, another thing which you introduced me to is, and again plays a huge part in your film as well, coffee. हाँ, कॉफी भी मतलब ऐसा है कि बहुत ऐसा नहीं है कि पहले से ही कुछ बहुत फैसिनेशन था. समथिंग क्योंकि did that come through the film और तेरे लाइफ में आया उसके बाद फिल्म में? ऑफ कोर्स सब फिल्म से कुछ भी नहीं आया मुझे. मैं भी जो भी है, इट्स ऑल अबाउट व्हाट आई डू इज कि आई जस्ट एवरी डे कुछ अच्छा ऑब्जर्व कर लिया, कुछ देख लिया आज तो जाके लिख दिया मैंने नोट में, and then I just translate it in the on the computer in the screenplay. So it's therefore it becomes very honest, right? अभी आज मैंने कुछ देखा है, मैं वही चीज डाल रहा हूँ, and इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि okay there is some imbalance or something in story structure, and then that's how I also try to connect, because I am not someone who would sit here and write कि अभी जो आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ. For me the process is a bit different than others, and it's also difficult. I mean that's what I'm saying. आज मुझे कुछ दिख गया, ये पेन ऐसे हिला रहा है, मुझे पसंद आ गया इसका वे, या कुछ ऐसा पसंद आया मुझे, so I would remember that, and then I would use it tomorrow or day after tomorrow when I'm writing. Okay, ये character को अभी कुछ बनाना है, कुछ आगे बढ़ाना है, then that's how progression for me happens. So it's amalgamation of taking things from different places in life, and that's why also I don't mind कि कुछ अगर ऐसे ही कुछ करना है, कहीं बैठे रहता हूँ मैं, तू बोलेगा तो मैं बस स्टॉप पे बैठे रहता हूँ मैं 1-8 घंटा, तो I don't mind doing that because I know 30 things. Why do I go at a cafe and write? Because I can't write in a closed space because I can't think of anything. My imagination start playing when I see people fighting, a couple fighting in a cafe, or you know things happening around in a cafe. When people come in, people go in, I just constantly look at people. And then I take some things, okay, then I know, okay, अभी फिर मेरा imagination चलता है. Of course वो same वैसे रहता नहीं है, but then that's how. But that becomes a first step towards what you're building. How do you write? I mean, what do you think? It's pretty random, but again, taking from life always happens, but sometimes for me it happens subconsciously. कि once what I tend to do is that unless and until I put everything down on paper, everything, just whatever is coming in my brain, I just put it out on paper, then take a step back and think about it. Where it is coming from, why is it here, what is the film about. What I first try to discover is what the film is really about, and I think after that, like after that, each and every line written on the screenplay, my goal, and in an ideal situation, what I'm working towards is that each and every line, action line, dialogue, whatever the character is doing, whatever the scene is serving that one core which I'm trying to tap into.
And what recently I've been very fascinated by is, and for a long time actually, is the वो कुछ ऐसा जो सबने फील किया है बट किसी ने उंगली रख के बताया नहीं कि ये था वो. समझ रहा है? Something like a deeper truth about life which everybody might have experienced, or at least I have experienced, and I like to believe we all live in patterns. So ऐसा कुछ नहीं है कि जो सिर्फ मेरे साथ हुआ है पूरी दुनिया में. ठीक है? And finding one specific thing in that pattern and just pointing it out, going more minimal, micro. And I think but the process is pretty random, I'll say. Writing, rewriting, thinking, taking a break, just noting down. And then, like right now the film I'm writing, Green Little Man, I wrote 5 drafts. I was not satisfied because I was still not sure what the core of the film is, where it's coming from. First I felt it's coming from my childhood. Then I discovered no, it's something that I'm going through right now. Right? And right now when you read it, maybe mota kahani same hai, but every line, the intention behind everything absolutely changed. So that epiphany is something I always look forward to. What I also want to do eventually is this, that, but what you are doing is while writing you're taking things from here and there. I want to reach a point where I'm allowed to do that while shooting. Slowly letting things. अच्छा हाँ अब ये यहाँ जा रहा है तो let it go there. Let's see what happens. But all of these conversations also I feel come from a place of privilege. Do you think so? This नहीं यार मतलब जैसे how you mentioned, right? I mean, if it is your way, then you are. I mean, I can't. You wrote the other day. You said 80 pages in one day. 80 पेज की स्क्रिप्ट भी कभी मैं लिख लूँ तो बहुत बड़ी बात होगी टोटल में. I mean, for me, things are very different, and for you, they are very different. And it's about, I think, finding what is you. And then you find a way. I mean, it's not about, you can't, I mean, for me, it is, I mean, of course, I can sit here and talk about privilege and not privilege and, you know, so many other things. But it's about, if you want to do it, you would do it. And you find a way to do it. No, definitely. But I'm saying luxury है ना art. I don't think. I mean, there are so many people who are doing so many different things. That's how I also know, right? I mean, if I'm not able to, for example, when you asked कि अगर मेरी फिल्म पैसा नहीं बना पा रही है, फिर भी मुझे तो फिल्म बनानी है. It doesn't mean that my film is bad or, you know, कुछ ये है. I would want to make films because I want to. So मैं शायद वो वर्नर हेrzog तो बोलता ही है ना यार, go work in a, you know, sex warden बनो या कुछ भी बनो तुम. You can work 6 months, you know, save money and save money. Taxi चलाओ, ये करो वो करो, and you know that's how you do it. I mean, if you want to do it, art, I don't think it's luxury, but it also, of course, it is not luxury. I don't. No, I'm saying it's not necessity, na. I think it is. Well, of course, it's a way of looking at things. I don't think life has any meaning without art. I agree. Without art or in general, I'm saying. Even with art, I don't think life has any meaning. हाँ मतलब फिर आर्ट है तो कुछ तो एटलीस्ट एक शायद इल्यूजन बनता है. हाँ इल्यूजन तो है फॉर मी एटलीस्ट, राइट? आई मीन फॉर दैट्स हाउ वी ऑल फंक्शन, राइट? अभी आज कोई दूसरा बंदा है, फॉर एग्जांपल समवन एल्स, अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही वुड बी, उसको पैसा उसके लिए इल्यूजन बन गया है. सो दैट्स व्हाई ही इज वर्किंग डे एंड नाइट टू गेट मनी. फॉर मी इट इज नॉट, ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स सबको ऐसा है तो है कि एक बेसिक तो सबको ही लगता है अमाउंट, बट देन इट्स अबाउट हाउ यू लुक एट लाइफ एंड हाउ यू मेक ऑफ इट. यू कांट, आज किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा ना कि इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ लो बैकग्राउंड एंड यू आर स्टिल ट्राइंग टू मेक फिल्म्स दैट यू वांट टू मेक, तो कोई वो जानेगा नहीं. मतलब ऑफ कोर्स आफ्टर द थिंग्स और आफ्टर द शोज और इन इंटरव्यूज you might go on talking about your struggle and, you know, what not, but end of the day what matters for you would be that, right, piece of art or what you want to do or what you want to create, if that is very natural to you. Otherwise, of course, film is something आज glamour भी है या जो भी है, there are different ways to look at things, but if we are finding our own way to look at life and reflect it and, you know, trying to understand us better,
and move ahead in life forward. So I don't think that really comes What I into- meant by privilege is that I know people, very good friends of mine, who had like they couldn't pursue filmmaking after a point because the financial pressure from of course. their place was so much, and all people बाहर का पर्सपेक्टिव है ना कि फिल्म में काम करता है तो बहुत पैसा बनता होगा. Yeah. है बहुत पैसा बनता है बट एक तरह के काम से एक वक्त के बाद Definitely. और वो एफर्ट के बाद. सो बाय प्रिविलेज आई मेंट दैट Yeah. द एबिलिटी वी आर अलाउड इन आवर ओन वे. आई एम नॉट सेइंग कि Yeah. अरे मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं है. ऑफ कोर्स बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी मैनेज करना है, बट एट द सेम टाइम इट्स जस्ट Yeah. कमिंग फ्रॉम दैट. वो तो है ही, वो तो है. And I think it's not just art. If you take up any sport, if you want, because our society has functioned in such a way. अभी आज if you want to play cricket, यार 11 लोग खेल सकते हैं. हाँ. बट खेलना तो 111 करोड़ लोगों को है. हाँ. क्रिकेट ही खेलना है ना सभी को. बट कोई खेल पाता है नहीं ना. बट that's what I mean. That is not just art that is privilege, I feel. It is just our societal function that is very weird because people don't want to take risk. And I mean, it's a risk. It's a risk. It's a risk, Yes. of course. But then you need to take risk to go somewhere. Yes, in life. but also you sometimes you do take calculated risks with the idea of कि do I have the appetite to Of course, वो तो है. कि अगर ये नहीं, if this doesn't work out, do I have the appetite to take it in? बिल्कुल है. So that's where हम घूम फिर के वापस सिनेमा फिल्म्स उसी में चले गए. हाँ. थोड़ा दूसरी तरफ जाते हैं. क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है? अभी मुझे पता है फिल्म के अलावा कुछ चल और कुछ तो रहा नहीं है, चल बट रहा और क्या बुकाउस की चल रहा है? हैं? क्या कह रहा है? That is बोल also सकता है अभी. going to ओपन come बहुत out. कैजुअली रखा है सारे AI पॉइंट. भी बचा है और रील का कंटेंट भी. क्या चाहिए बोलना. रील ऐसा कुछ तो बकचोदी भी. ये हाँ यार थोड़ा चिल करो ना माहौल. थोड़ा बकचोदी का मतलब बात करो. inside हाँ भाई, बहुत तारक ज्यादा मेहता conversation. का ये इसका. हाँ भाई. ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर दिख रहा है ना ये फ्रेम में. क्या चाहिए तुम लोग को? अबे मेरे थोड़ा को मत वो देख. वायरल ऐसा सब. भाई कितना मजा आ रहा है. तुम लोग को मजा नहीं आ रहा है ये कॉन्वर्सेशन में? इंसाइटफुल है, बराबर मजा आ रहा है. Insightful है, मजा आ रहा है. मैं तो हंस भी रहा, मैं अगर smile भी कर इसका रहा हूँ. मार्केटिंग देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा बिकने वाला चीज भी देखना. ठीक है, ठीक है. ये मांगती है रे आजकल, क्या बोलते हैं. तेरे को वही अगर ये पूरा- पसंद आ रहा है तो तू कैसे भी बेचना उसको. हाँ, उसको बेचेंगे, उसका भी तेरे को आती सिंपल है. चीजें ही करनी है लाइफ में. तू शाहरुख खान का जाके इंटरव्यू ले, तेरे को बेचना भी नहीं पड़ेगा. कॉल आउट कर दिया लिया नहीं. भाई रील कंटेंट. चलो गाइस, बैक टू डिस्कशन. तो अभी क्या अपन लास्ट क्या बात कर रहे थे? और क्या चल रहा है जीवन में? सिनेमा ही चल रहा है. नहीं, ये जो इतना आर्टिस्टिक आपका बातें हुई है. हाँ. एक मैं नेमिल का एक ट्रेड बताना चाहूंगा कि नेमिल को रात को नींद नहीं आती. नहीं जब नींद तक- तो बहुत आती है मुझे. नहीं, जब तक वो फेसबुक पे तारक मेहता के क्लिप्स ना देख ले. फेसबुक पे तारक मेहता की बहुत बहुत ज्यादा क्लिप. ये क्या है तेरा, ये क्या फैसिनेशन है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ? फैसिनेशन नहीं है ना ही मुझे नींद का कोई प्रॉब्लम. बट मुझे ऐसा है कि मैं एटलीस्ट 4 घंटे दिन में तारक मेहता देखूं तो कैसे पॉसिबल होगा, है ना? पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मुझे तो मजा आता है. हाँ. बट वही है कि मतलब आई जस्ट एंजॉय इट. आई मीन आई डोंट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ. आई जस्ट वांट सम टाइम वेयर आई एम, वो वापस वही घूम फिर के वहीं आता है. हाँ. वेयर आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट थिंग्स, थिंकिंग अबाउट लाइफ. हाँ. मेरे को एक बार हम लोग नेमिल बात कर रहा था कुछ, तो हम लोग 4-5 लोग बैठ के बात कर रहे थे. कहता यार मेरे ये होता है वो होता है, मैं सोचता रहता हूँ, इतना सोचता हूँ, इसके बारे में सोचता हूँ, फिर इसके बारे में, फिर यार मैं बहुत थक जाता हूँ यार. सोच रहा हूँ इतना जेन्युइन था ना कि मैं थक जाता हूँ. देन तारक मेहता कम्स इन. हाँ मतलब मजा आता है. एंड देन आई वॉच इट. और मुझे तो बहुत बहुत कुछ मैंने, अभी तुमको तो बिलीव नहीं होगा बट अभी बोलना भी शायद सही है कि नहीं पता नहीं, चोरी किया है मैंने तारक मेहता से. क्या बात है? तो फिर तेरी आर्टसी फिल्म है, तेरी एक्सपेरिमेंटल फिल्म. अगेन यू आर ट्राइंग टू टैग से तो कुछ नहीं. बट हाँ वही है कि मतलब पसंद आता है, देखता हूँ मैं, मजा आता है. एंड आई गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर आल्सो. आई एंजॉय एब्सोल्युटली विद ऑल माय. क्या है तेरा फेवरेट तारक मेहता कैरेक्टर बताने में? इफ यू हैड टू पिक वन. नहीं यार ऐसा कुछ मैं नहीं बता सकता. बट एक है जो मैं तेरे को बाद में बताता हूँ. हाँ. ओह, जो तेरे को कैंप बोला था ना? पार्टी. नहीं समथिंग एल्स. बट उसके साथ कुछ करना है मुझे काम. बका के साथ. नहीं अभी इधर बताना सही नहीं रहेगा ना. There is someone from तारक मेहता देख लिया. जिसके हाँ, साथ I want to you work, want to yes. work
Oh yes, yes. I remember. So everybody remembers. Yeah. And I mean, I enjoy it, and that's how I also try to get to, because as I said कि वो एक मजा आता है मुझे देखने में, और इसलिए देखता हूँ, माइंड फ्रेश हो जाता है, वही उसका पर्पस भी है शायद उनका. Bro, ये मतलब मुझे तो पता है ना, but after if someone is watching this from the beginning, after the whole conversation when this gets dropped, ना मेरा भी revelation वैसे ही था. I was staying at this place और रात को तारक मेहता देख रहा था, तो मुझे लगा एक ऐसे ही आ गया होगा फेसबुक पे तो देख रहा है. नहीं यार, देखे जा रहा है. मेरा वो चलता रहता है. Entire night it would be on my Facebook, on my things, and yeah, I mean I'm not active on either, but I would go to Facebook to watch. I know. तेरे लिए भी कुछ तो होगा ना, एक लीजर एंड बहुत सारी चीज है. मैं तो कुछ गिल्टी लीजर बता दे. बहुत सारे हैं भाई. शायद मैं YouTube पे बहुत कंटेंट देखता हूँ, जैसे मैं ये सब. वो तो पता है, बट भूत की कहानियां कुछ तो देखता है. नहीं वो तो चल, वो पॉडकास्ट में बहुत सारे सुनता हूँ, द इंटरनेट सेट से सुनता हूँ, वो फिर भी गिल्टी नहीं है, उसमें अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन है. मेरा सबसे गिल्टी वो साइडमैन, बीटा स्क्वाड, एकदम हार्डकोर टीनेजर वाला ना, पता नहीं मुझे मजा आता है. और क्या देखता हूँ मैं YouTube पे? कॉमेडी फैक्ट्री, फिर हेरा फेरी के वो फनी सीन्स. मेरे लिए, बट बाय द वे मेरे लिए गिल्टी नहीं है, प्लेजर. तारक मेहता सिर्फ प्लेजर है, गिल्टी है. सो हां, मैं तो बचपन में फैन क्लब भी बना. तारक मेहता का फैन क्लब शायद मैं फॉलो करता हूँ. फेसबुक पे शायद फॉलो करता है. बट हाँ, अभी मैं आजकल क्या देख रहा हूँ पता है? जेन्युइनली बहुत क्या देख रहा हूँ. AI टूल्स, AI के वीडियोस, और क्या क्या कर रहा है AI. तूने वो देखा? मैं नाम भूल गया. टेक्स्ट टू वीडियो का जो एक अभी मॉडल आया है, यू पुट एनीथिंग एंड इट क्रिएट्स. सो कितने एनिमेशन का है सारा कुछ. हाँ, बहुत सारे हैं. तो बट अब तू स्टिच करके तेरी फिल्म बना सकता है. या यू कैन डू दैट, बट एनीवे मतलब वही है कि आई थिंक इट्स स्टिल द मेन थिंग इज प्रॉम्प्ट्स एंड इट इज स्टिल कमिंग फ्रॉम अस. सो अंटिल दैट इज देयर तो काफी टाइम तक वो चलेगा ही. सो इट्स ह्यूमन कंप्लीटली इरेडिकेट तो नहीं हो सकते. एंड आई डोंट थिंक, ऑफ कोर्स मतलब हर साल हर एज में वही होता है ना यार, जब PCOs चले गए तो फिर बोल रहे थे तो दुकान वाला क्या ही करेगा. वो ना, आई मीन, सो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम चेंज, एंड इफ यू आर नॉट अप विद इट यू माइट लूज अप ऑन द अपॉर्चुनिटीज व्हिच इज गोइंग टू हैपन एंड व्हिच इज आल्सो हैपनिंग, राइट? ऑलरेडी हैपनिंग. पीपल आर लूजिंग ऑन देयर अपॉर्चुनिटीज टू वर्क, क्योंकि पहले वही टाइम में वही चीज को जो इतना टाइम लगता था वो भी हो जाता है जल्दी. सो एवरीवन नीड्स क्विक थिंग्स. बट हाँ, मतलब देयर आर सो मेनी स्टिल थिंग्स स्क्रीन राइटिंग के लिए है in screenplay, but it of course it all helps you to do it. So there is still not. The other day I was going through, शायद मैंने भेजा भी है तुमको. It is about decks को रिवाइज करके दे देता है. अच्छा, कि कितना तुम्हारा डेक में कहाँ कौन सा ऑडियंस है तुम्हारा फॉर फिल्म पिचिंग स्पेशली. अच्छा. So वो भी सब करता है, बट आई मीन इट्स ऑफ कोर्स गोइंग टू कम थ्रू ह्यूमंस. एंड ऑफ कोर्स बहुत फैसिनेटिंग है, इसका बहुत कुछ कर सकते हैं. देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ डूइंग थिंग्स. आ रहा होगा ना क्या कह रहा है? देन यू आपने टेलीफोन वाला एग्जांपल, यू मिस राइटिंग पोस्ट. He's saying basically what you mentioned is कि फोन आ गए तो इवोल्यूशन में चेंज होती गई. सो देन ही इज लाइक कि वो नॉस्टैल्जिया वैल्यू में तुम यू मिस राइटिंग पोस्टकार्ड्स. यस ऑफ कोर्स वो तो रहेगा ही, वो तो बिल्कुल रहेगा. आई मीन मतलब सब है ही. आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर से, आई आल्सो यूज. मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है AI ना. आई लाइक टू कीप अप विद व्हाट इज कमिंग एंड गोइंग. So I mean writing postcard is now a nostalgic act instead of a way of communication, because you can just WhatsApp or give a call. तो वो अभी एक ऐसा है कि एक एफर्ट है उसमें. तो तुम जिससे इश्क है ना मम्मी पापा से, that's what I meant, धर्म, उनको लिखोगे पोस्ट कार्ड, तो वो एक अभी एफर्ट वाला एक्ट हो गया, बट कम्युनिकेशन का मीन्स चेंज हो गया. फेयर इनफ. बट हाँ यार, मुझे भी बहुत क्या लगता है, वी हैव टू मतलब एक ही साल में इतना इवॉल्व किया है ना वो टेक्स्ट टू वीडियो ने. जैसे वो विल स्मिथ का स्पैगेटी वाला वीडियो था, और अब जिस तरह का वीडियो वो कर रहे, तो वो बहुत
drastically चेंज तो हुआ है, on the वो तो आ भी जाएगा, आई थिंक आ तो जाएगा, बट वही है कि देयर इज स्टिल गोइंग टू बी थिंकिंग, तो नहीं हो सकता ना, अभी तक तो अभी नहीं तक नहीं हो सकता. सो अंटिल दैट इज स्टिल देयर, एंड आई थिंक सब कुछ वही है ना कि तुम सोचते हो एंड देन यू रिफ्लेक्ट इट थ्रू योर आर्ट और एनीथिंग, राइट? तो जब तक वो है तब तक तो आई थिंक, और जब तक वो भी करेगा तब भी कुछ तो इवॉल्व हो ही जाएंगे ना हम. हाँ, बट उसको एज अ टूल बहुत आसान कर दिए उसने चीज. ऑफ कोर्स. हाँ, बहुत सारी जॉब्स वही है. अभी हम लोग आते वक्त मैं भी यशवंत और यही बात करते हैं कि जब तक तुम थिंकिंग माइंड हो तब तक रहोगे. हाँ, अगर तुम बहुत ही लेबर ड्रिवन वर्क कर रहे हो तो यू माइट गेट रिप्लेस्ड. मे बी, बट आई थिंक जब तक, बट फिर भी इंसान तो सोचेगा ही ना, वो तो कुछ ना कुछ तो ढूंढेगा ही. इट्स ऑल, मतलब अभी आई डोंट नो, आई आल्सो डोंट एक्चुअली, ये सही रहेगा कि नहीं, स्टेटमेंट भी सही नहीं, पता नहीं, बट एकदम पता नहीं है ना कि ये डार्विन जो बोलता है वही है कि नहीं. आई एटलीस्ट इज व्हाट आई थिंक. मतलब देयर कुड बी मिलियंस ऑफ अदर explanations of things which we are yet to discover. Also science in that way, I think about it. But again, fittest, survival of fittest, वही आ जाता है सब चीज में. करेक्ट. पहले से ही है, पहले अभी वो भी बोल सकते हैं कि पहले तो लोग मर जाते थे, अभी भी वॉर्स चल रहे तो वॉर्स में भी लोग मरते हैं. सो इट्स ऑल, वहां से लेके AI तक देयर इज सच अ ह्यूज गैप, बट वहां भी वही हो रहा है, यहाँ भी वही होगा. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द क्या सही है क्या गलत, कुछ नहीं भाई, मेरे को तो लगता है यार. हाँ, मेरा इसीलिए मैं उधर ही ले जा रहा हूँ कॉन्वर्सेशन को कि तेरा जो हाँ. फिलॉसफी है कि नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग. हाँ, आई मीन इट्स जस्ट यू आर सिंपल है, मतलब मे बी क्या है तेरा. नहीं, आई एग्री टू इट. आई एग्री टू कि सब्जेक्टिव रियलिटी के हिसाब से तो सब सही सब गलत है ना. हाँ यार, मतलब आई डोंट थिंक देयर कुड बी वन राइट थिंग कि कुछ भी एक चीज कर रहा हो. I don't think fact can exist in a world where we are living. Again, fact can exist. मतलब एकदम वैसे कुछ चीजें नहीं होगी. मतलब अगर तूने कुछ किया है, you are going to speak from your memory, and your memory is always going to pick on certain things. Memory ही dramatic है ना. That's how drama works in narratives or stories और सारे कुछ. क्योंकि आज अगर मैं कुछ स्टोरी बता रहा हूँ कि मैं मेरी ट्रिप की कोई स्टोरी बता रहा हूँ, देखो, तो आई विल पिक ऑन सम थिंग्स एंड टेल यू. करेक्ट. आई एम नॉट गोइंग टू एग्जैक्टली टेल यू कि ओके ऐसे 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 करके किया. एंड उसमें भी द थिंग्स दैट आई स्ट्रेस अपॉन आर गोइंग टू बी स्टोरी टेलिंग है ना. उसमें स्टोरी टेलिंग है. आल्सो मेमोरीज आर एकदम एब्सोल्युटली अनरिलायबल. देयर आर मिलियंस ऑफ स्टडीज एब्सोल्युटली या कि वेयर पीपल हैव नेवर एक्सपीरियंस समथिंग और उनको लगता है कि वो मेमोरी क्रिएट हुई है वैसे. अभी भी आज एक चीज की वजह से, अभी मैं तेरे को अगर बोलूंगा कि तेरा पौंडीचेरी ट्रिप कैसा था, हाँ, तो तू बोलेगा अच्छा था. हाँ. क्यों अच्छा था? क्योंकि तू ओवरऑल मेमोरी उस तरह से बोल रहा है. बट देयर वुड बी टाइम्स तेरे को हेट हो रहा होगा अपने आप पे कि यू नो यू वुड बी हेटिंग योरसेल्फ कि व्हाई आर यू हियर. हाँ, व्हाट एम आई डूइंग? ऑफ कोर्स, व्हाट आर यू डूइंग हियर? But that gets eliminated. Yeah. Or sometimes that's the only part that stays and the happy part gets eliminated. So it's about in your memory तुम कितना याद रख रहे हो, उसी पे चीजें आ जाती हैं. I think. Correct. दूसरा एक चीज था जो तेरे फिल्म का भी एक बहुत important theme है. We tried discussing other things. We're coming back to the film. तो उस नहीं, but वो that's our means of having different conversation, which is a sense of ownership. And borders. पता नहीं कैसे हो सकता है अचीव. यार मेरे को एक कोई तो मिला था, एक वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ एंड आवर एग्जिस्टेंस ना. सबको वो जानने का तो वो रहता है. तो बोलता है कि इट्स लाइक अ गेम. लाइफ का जो गेम होता है ना, लाइफ गेम होता है ना, जो लाइफ स्टाइल, पता है? हाँ. वैसे फन स्कूल का जो आता था लाइफ गेम, मतलब वैसे भी. बट वही बोल रहे कि इट्स लाइक अ गेम, समवन इज प्लेइंग अस के इसको पैदा कर दिया, अभी देखते हैं इनको कैसे. फॉर देम इट कुड बी एंटरटेनमेंट और व्हाटएवर. आई मीन इट्स जस्ट इट्स दैट रिक एंड मॉर्टी एपिसोड एज वेल ना भाई. वो तो क्रेजी है. Created an entire universe too. And it's also the best part is the universe realizing that our entire purpose is to fuel this one man's engine. So it's like that. I mean कुछ भी explanation हो सकता है कोई भी चीज का. एंड इसलिए मतलब ओनरशिप तो है ही ह्यूमंस का. आई थिंक एनिमल से आता है, पहले से आ जाता है, राइट? एनिमल्स के भी होते हैं ना टेरिटरीज मार्क करने, एंड वहीं से हमको भी वो सेंस ऑफ ओनरशिप का हो गया है. बट हम अभी बहुत लोग हो गए.
हाँ भाई इवॉल्व भी कितने बहुत हो गया है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया ना, बहुत ज्यादा लोग हो गए, तो देन इट हैज टू कम डाउन अगेन. वो कम होना चाहिए, कुछ होगा ही जो इवेंचुअली होगा, डिप डाउन होगा, या फिर अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज एनी वे ऑफ सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीशीज, राइट, ऑफ दिस प्लैनेट एज वेल. बट वो है ओनरशिप का. अगेन हैव टू डेल्व इनटू द फिलोसॉफीज की. मुझे वही लगता है कि यार मैं कोई चीज को क्यों अपना बोल रहा हूँ जो मेरा होने भी नहीं वाला है, राइट. आई मीन इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम ओनिंग, बट यू नो आई लाइक टू ओन थिंग्स, राइट. कि आज मैंने, अरे बहुत सही शर्ट है ये, मेरा शर्ट है, या फिर कोई भी कुछ भी चीज का हो सकता है, इवन फॉर पीपल यू लव, राइट. एंड दैट्स हाउ आल्सो यू सॉर्ट ऑफ मेक रिलेशनशिप. अगर you might be insecure of someone because you want to make that person yours and not that person, and everything, every human, everything is their own, independent है ना. जगह भी वही है, घर भी वही है. तो I want to live in a world कि मैं अगर यहाँ घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं घूमने गया हूँ, फिर ये आ रहा है इस तरफ घूमने आया है इधर जू बीच पे, तो उसको सोना है, मेरा घर खाली है तो सो सकता है, क्योंकि वो मेरा घर ही नहीं होगा. So it's just about a free space where we can all without borders यार. मतलब बॉर्डर से कितने सब प्रॉब्लम्स, वॉर, सब उससे की वजह से हो रहे हैं ना, बिकॉज वी वांट टू कॉल दिस कंट्री आवर्स. It can become chaotic, but at the same time, if everybody collectively has lost the sense of ownership, then maybe there won't be any crime. I don't think ये possible ही है हो पाना. But this is something that I would want कि कुछ चीजें मैं रख लूँ ना यार. अभी तुम मुझे पूछ रहा है आइडियल सिचुएशन क्या होगा. हाँ आइडियल ये होगा. नहीं हाँ I mean this is what I would love. I also don't know how it would function or anything like that, but I feel मतलब वही बॉर्डर से ही वही प्रॉब्लम आती है ना, कि पहले क्या होता है कि पहले फैमिलीज में होगा ना कि अरे ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है तो ये इम्पोर्टेंट है. फिर वो आ जाएगा कि ओके ये मेरा समाज है, उसमें इम्पोर्टेंट है. फिर ये मेरे ये गुजराती लोग हैं तो ये वो सारे इम्पोर्टेंट. उसको और एक स्टेप पीछे ले जाना, ये मेरा बॉडी है. बिकॉज वही बोल रहा हूँ ना, एवरीथिंग अपना ये एक बहुत ही टर्मिनोलॉजी ड्रिवन चीज है कि हम हमेशा बोलते हैं कि अरे मेरे हाथ पे लग गई, मेरी आंखों से मैंने देखा. सो व्हेन यू से मेरी, माइन, दैट मीन्स देयर इज एन ओनर or there is something and your hand is different from that something. यार ये तो सही है, but language wise I'm saying सही है. So then there is a sense of layer between you and your body. So अगर तू उस level तक अगर ownership को dismiss करेगा, so then maybe there is an answer of how this ideal world could ideal है कि नहीं पता नहीं, but how this world without any ownership can be created or can even function. काफी स्पिरिचुअल हो जाएगा ये, which is something we should talk about. But अभी हो रहा है सनसेट, लाइट जा रही है, बट सनसेट और तेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप रहा है. इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट. नहीं यार, नॉट रियली. आई मीन वो एक पर्सनल चीज है, बट ऑफ कोर्स देयर इज, सबके लिए अपना अपना एक रिलेशनशिप हर चीज के साथ होता है. नॉट नेसेसरीली, आई मीन इतना ही बोल सकता हूँ कि इट्स नॉट एज होपफुल एंड जॉयफुल एंड serene for me as it is for you maybe. But yeah, I mean you find a way to live, and that's how it is. And then you create a film, yeah, which is entirely shot. Yes. I like, just I'm not giving anything away. The last phrase of your logline was it's an exploration of the, what is it, twilight, perpetual pre-twilight phase. Correct. बढ़िया यार. क्या है अभी है अपने पास लाइट, अभी चल रहा है, we have scope. तू बता, शेयर योर व्हाट इज लाइफ, क्या चल रहा है लाइफ want to, how do you see the times ahead? Where do you see yourself in next 5 years? Interview. यार जो absurdism वाली philosophy है, जो मतलब boils it down to one thing, which is life is meaningless. So what you're saying कि maybe it's just entertainment, it's a game which you are playing, and वो छोटे छोटे मतलब बना के छोटे छोटे वो एक कि अभी ये है, यहाँ तक पहुँचना है, फिर वहाँ तक पहुँचना है. I just want to bring it down to कि आज के दिन में क्या करना है. मस्त है यार कि आज के दिन में ये करना है, फिर देखते हैं. हाँ यार, कल कौन देखा यार, कोई बॉम्ब फोड़ देगा अपने पे. हाँ अभी जो स्टेज चल रहा है वही होगा ना, या फिर कोई रोबोट आके मार देगा, या फिर रोबोट बॉम्ब फेंकेगा. तीनों चीजों में से एक तो हो जानी है कभी ना कभी. हाँ बहुत रैंडमली खत्म हो जाएगी चीजें.